हम्म। आ गए देखो जाओ। देखो। फाइव सेवन डबल नाइन Good morning, Meena ma'am. Good morning, madam. Ma'am, actually my camera is not working properly. Ma'am, are you there? Yeah. I am audible? Hello? Ma'am, I am audible? Hello? Hello, good morning, ma'am. Hello, good morning. Ma'am, am I audible? Yes, Okay, thank you. We will wait another 5 minutes for everyone to join the session.
A very good morning, all of you. Good morning, ma'am, and good morning to all of you. Everyone is doing fine this morning. Am I audible to everyone? Yes, ma'am. Am I audible to everyone? Yes, ma'am. Okay. I think getting so much of noise from there. So we will start up with this session. So मैंने ऑफ कर दिया है राइट. ma'am, you there? Yeah, I'm there. Yeah. So let's start the session. I would like to thanks to Dr. Meena ma'am, as she is Assistant Professor in College of Nursing, Government Medical College, Nagpur. And I would like to thanks to the Maharishi Markandeshwar deemed to be University Mulana Ambala, Haryana, to the organizing team and to the GIR Foundation for organizing this expert talk on leprosy. So thanks to the organizing team, Dr. Uma ma'am, she is the principal of university. Dr. Suman ma'am, she is a professor of community health nursing. Pooja Jaiswal ma'am, associate professor, and Jyoti Fogat ma'am, she is an associate professor in child health nursing. So it's over to you, Meena ma'am. So we will continue the session, ma'am. Thank you very much, ma'am. You're most welcome, ma'am. Is it visible, ma'am? No, ma'am. It's not visible. No. Now it's visible, ma'am. It's visible now? Yes, ma'am. It's visible, ma'am. now. Okay, thank you, ma'am. Very good morning to one and all present over here. So I first welcome you all for this a very genuine problem all over the world. Today we come together not just as a nurse over here, but as an agent of health justice to reflect deeply on an age-old disease that, despite remarkable progress in treatment, continues to challenge our health system, communities, and hearts. We are talking about
leprosy, a condition that demands not only clinical excellence, but care rooted in dignity, compassion, and community empowerment. Leprosy is not just a medical condition. It is a social condition woven into the fabric of stigma and misunderstanding. It persists in pockets across the world, including in India. As frontline caregiver, nurses are uniquely positioned to lead transformation from early detection to rehabilitation, from patient empowerment to community engagement. So let's explore how we can advance knowledge, strengthen awareness, and uphold the compassionate care in our nursing practice. So just talk on the leprosy. What is leprosy? Leprosy is also known as a Hansen disease, a chronic bacterial infection primarily affecting the skin and the peripheral nerves, usually caused by Mycobacterium leprae. It's primarily affecting the skin and peripheral nerves. It also affects the mucosa of upper respiratory tract, eyes, muscles, bones, testes, and internal organs also. The oldest disease known to mankind is leprosy, and oldest disease known to causative agent as a scabies. The incubation period of leprosy is more than 5 to 7 years or more for leptomatous cases. Leprosy is curable with multi-drug therapy. So, what is the impact of leprosy? Leprosy, if not treated at a time and left untreated, it could lead to disabilities in a small proportion of the patient. Globally, 2 to 3 million people are estimated to be permanently disabled because of the leprosy. So, what is the background? The Hansen disease is named after a Norwegian scientist, Gerhard Henrik Armor Hansen, who discovered leprosy in 1873. The leprosy has afflicted humanity, left behind a terrifying image in history and human memory of mutilation, rejection, and exclusion from the society. Lots of people had suffered its chronic course of incurable disfigurement and physical disability. By G. A. Hansen in 1873, first bacterium to be identified as a causing disease in man. Many countries in Asia, Africa, and Latin America with a significant number of cases. About 1 to 2 million people disabled due to past and present leprosy who need to be cared by, by the community. So what is the epidemiological impact of leprosy? Leprosy is a neglected tropical disease which still occurs in more than 120 countries with more than 2 lakhs new cases reported every year. The reduction in the number of new cases has been gradually both globally and in the WHO regions. So what is the epidemiology of leprosy? That is the burden of disease all over the world. The leprosy is reported from all the 6 WHO regions. The majority of annual new cases detection are from Southeast Asia. In the world, leprosy still occurs in more than 120 countries. Globally, more than 2 lakhs new cases reported every year. And globally, 2 to 3 million people are estimated to be permanently disabled because of leprosy. In the Nepal, according to WHO, 3,000 new cases reported every year. Epidemiology of leprosy is WHO, as per WHO, data of 2019, India, Brazil, and Indonesia reported more than 10,000 new cases. India has the greatest number of cases with Brazil second and the Indonesia third. In 2019, 45 countries reported 0 cases and 99 countries reported fewer than 1,000 new cases. So what are the determinants of leprosy? As we know, there is a triad of health, that is agent, host, and environment. So in the agent, what is the agent for the leprosy? It's the Mycobacterium leprae, and the source of infection, all the patients with active leprosy. Both man and wild animals are the source of infection. Moving to host factor, host is the all the man and wild animals. The first is what is the main factor affect, that is age.
Leprosy affects all ages people. Leprosy has the peak incidence between 10 to 20 years of age. Both the sexes, male and female, get affected by the leprosy. A high prevalence of infection among children means that the disease is active and spreading. Moving back to environmental factor, the tropical and subtropical regions where warm and humid climate provides favorable condition for the bacteria to thrive. Second is the overcrowding. Third, poverty and lack of educational or lack of awareness. And the last is the most important, stigma and fear of discrimination and isolation. These are the factors responsible for the Hello? Is any problem? Meena ma'am, could you Yes. just yes, ma'am, just do one thing. Let's just Yes. zoom the your PPT, ma'am, because some of the people they are not able to visualize it, ma'am. You just zoom it, ma'am. Actually, it's a in the PowerPoint presentation and whole screen. Yes, ma'am. It's not visible properly. Yes, ma'am. It's not visible. You just make it done, ma'am. Visible, ma'am. Ma'am, now visible, ma'am. Now visible. Okay. Yes, ma'am. Okay. Yes, previously Okay, also thank you. visible. Thank you. Okay. By my side is very good visible. I don't know the exact cause for the other one. Okay. You can continue. Now it's visible to everyone. Now it is visible to everyone. Yes, ma'am. Okay. Thank you so much. Okay. You're most welcome. Moving back to stigma related to leprosy, as we are all the health professional and more concerned about the what is the exact cause behind not occurring the zero. Zero means eradication of the leprosy. The main cause is the stigma. What is stigma related to leprosy? The leprosy has been historically associated with the significant stigma due to the misconception about its causes, transmission, and the effects of leprosy. The first is the religious and cultural stigma. That is, some people thought that it is a curse or punishment. The second is the social stigma. That is, some people get themselves isolated and excluded from the society. And the third is the related to school and workplace discrimination. Many children with leprosy struggle with school enrollment, and adult faces the job loss or rejection from the community. Economic stigma, that is, because of the loss of employment, many patients are fired from the jobs due to the misconception about the contagiousness and discrimination. Healthcare stigma, that is delayed diagnosis and treatment, that because of the fear of being labeled as a leprosy person, many patients many patients not themselves registered and not causing the delay in early treatment. Then healthcare worker bias also, some healthcare professional also reluctant to treat leprosy patient due to the misunderstanding about the disease. And there also psychological stigma which causes the depression, and because of the fear of social rejection often leads to anxiety, depression, and suicidal thoughts in the patients. So how does leprosy related stigma affect the patient, and what strategies can be used to reduce the stigma in the community? This is the major questions in front of all the healthcare workers. So what are the impact of stigma? That is the social isolation and discrimination, then the loss of employment and the financial burden, psychological distress and depression, and delayed treatment seeking behavior. These are the impact of the stigma on the community. So what are the strategies we can plan to reduce this stigma? First is the health education and community awareness program. Then government policies, that is law preventing discrimination at work, school, and the healthcare places. Early diagnosis and treatment, that cause the reducing visible disabilities can minimize the stigma. Then empowering cured patient as advocates and promoting social inclusion, that is the patient to patient approach. Then educating healthcare workers to provide non-discriminatory care also. That these are the strategies we can implement. That is also social stigma and discrimination, which we can
we can comply by the our health education and awareness program. So these are the 6 regimes all over the world which has the impact of leprosy. The leprosy can be eradicated, yet not leprosy cannot be eradicated because of leprosy has a long and variable incubation period. Second, leprosy has a multiple route of transmission. And third, leprosy has no proper vaccination. So these are the 3 major causes as the WHO get eradication of leprosy, but not getting achieved this goal. So elimination level of leprosy is more than 1 case per 1,000 population every year, and level of leprosy for declaring it as a public health problem is more or less than equal to 1 case per 10,000 population. India has achieved the elimination level by December 2005. Nepal has achieved the elimination level by 2009 and declared elimination in 2010. But according to WHO, 3,000 new cases reported every year in the Nepal. Leprosy, now the transmission of leprosy. How the leprosy get transmitted? The leprosy is not spread through the casual contact with the person who has leprosy, like shaking hands or hugging, sharing meals or sitting next to each other. Moreover, the patient stop transmitting the disease when they being treatment. Incubation period of leprosy is 5 to 7 years or more for the lepromatous cases. So how they get transmitted? It's an unclear pathophysiology of leprosy. It transmits from person to person. Leprosy is likely get transmitted by droplets from nose and mouth during the close and frequent contact with the untreated cases. Scientists believe it occurs when a person with leprosy coughs or sneezes, and a healthy individual breathes in the droplets containing pathogens. So this is the transmission, and the portal of exit of the organism is the nose route. In the context of leprosy, the portal exits refers to the route through which the bacteria, that is the Mycobacterium leprae, can leave the body of an infected person and cause leprosy. The lepromatous cases harbor millions of Mycobacterium leprae in their nasal mucosa, which are discharged when they sneeze or blow the nose. And the bacilli can also exist through ulcerated or broken skin of bacteriological positive cases of the leprosy. So it takes a month of close contact with an untreated patient to contract the illness. Hansen disease cannot be conveyed from a mother to her unborn child during pregnancy, nor it can be transmitted through the sexual contact. Identifying the source of infection can be difficult due to the bacteria's slow growth and as it takes the time to take the symptom and manifest. So the incubation period, as we know, it's more than 5 years. However, the symptoms may appear within 1 year or as long as 20 years or more as well. So what are the clinical features of the leprosy? The clinical features of the leprosy there are some cardinal features. The first is the partial or total loss of cutaneous sensation in the affected areas. This is the most and first important sign to be appear in the patient. In over 90% of patients, the first symptom noticed as a numbness. Then next sign is the thickened nerves. Most common nerves are the ulnar nerves. And the presence of acid-fast bacilli in the skin of nasal smears. The signs of advanced disease are striking, that is the presence of nodules or lumps, especially in the skin of the faces or ears. Then foot drops, claw hand, plantar or palmar ulcers, loss of fingers or toes, nasal depressions, and other deformities are the advanced signs and symptoms of the leprosy. So, what are the cardinal signs of leprosy? The cardinal signs of leprosy are the hypopigmented or reddish skin lesions with the loss of sensation. This is the most important cardinal sign. Then thickened peripheral nerves with the sensory or motor loss. And the third, positive slit skin smear showing acid fast bacilli
in the mycobacterium multibacillary leprosy. This is the hypopigmented patches. In this way, we are going to see. Then these are the tests for checking the sensitivity. This is the most common nerve involvement in the leprosy, that is the ulnar nerve. Cortic appearance is there. And these are the most common features, that is the pale or pink colored skin patches. Then the feeling of insect crawling or numbness like sensation. Then reddish skin patches with the sensory loss, fingers or toes, short turns. These are the common features of the leprosy. Then what are the common deformities of untreated leprosy? The first is related to hands and feet, that is claw hand or foot draw. Then second, related to face and eyes, that is facial palsy or saddle nose deformity or corneal ulceration and blindness. Then musculoskeletal and systematic complications are chronic ulcers and osteomyelitis, absorption of disease or loss of fingers or toes, and psychological and stigma issues. These are the lower limbs deformed in the leprosy, that is normal foot and the foot draw. This is deformities of the hands and lower extremities also. So there is a classification of leprosy, Riddle-Joplin classification of leprosy. This based on the immunohistological classification. That is, first is the tuberculoid, then borderline tuberculoid, then borderline, then borderline lepromatous, and lepromatous leprosy. These are the 5 major classification of the leprosy based on the immunohistological classification. In this way, the first is the tuberculoid. In this, highest is the CMI, that is cell-mediated immunity is the highest one, and low. Hello? Hello? Any problem? No, ma'am. Yes, In you can TT, in TT, we are going to see the single lesions only, and there is a highest CMI, that is cell-mediated immunity level is the high. Then bacillary load is low, and lepromin test is highly positive. And then in lepromatous leprosy, there are the multiple lesions are present over there, and there is a highest bacillary load and poor cell-mediated immunity index. So these are the all 5 classification, in which the major is the tuberculoid leprosy and lepromatous leprosy major classification as there. In tuberculoid leprosy, single or few lesions are there, highest CMI, less bacterial load, lepromin test is strongly positive. Then in borderline tuberculoid leprosy, there is a single or few lesions, and the lesions are like a satellite lesions like appearance is there. Then in borderline leprosy, multiple lesions are there, and the lesions look like a punch out lesion or inverted saucer shaped lesions. In borderline lepromatous leprosy, there are the multiple lesions, and almost both limbs are symmetrically involved. In lepromatous leprosy, multiple lesions are present, diffuse lesions, and bilateral symmetrical appearances there. And in lepromatous leprosy, there is a lowest CMI, heavy bacterial load, and lepromin test is weaker positive or sometimes negative also. And based on the lesions, there are the 2 possibacillary leprosy and multibacillary leprosy is the main 2 classifications. This is the Riddle-Joplin classification. If the single lesion is there, then the tuberculoid, and in multiple lesions are there, then the lepromatous. So these are the signs and symptoms we are going to see in the tuberculoid leprosy, borderline tuberculoid, and lepromatous leprosy. So what are the tests? How we are going to diagnose the leprosy? By the lepromin test. Lepromin test is the immunity status test. Lots of noises there, ma'am. Yes, ma'am. I'm asking the technical team to mute everyone.
Okay. The main is the lepromin test for the leprosy, and lepromin test is nothing but the immunity status test. The lepromin test is not a diagnostic test. It is only checking the immunity status of the individual, and it is the based on the Dharmendra antigen. And dose we are using for the lepromin test is a 0.1 ml of lepromin is injected intradermally into the inner aspects of the forearm and reading between the 20 48 hours to 21 days. Hello, is A there any humble problem? request to all the participants, kindly mute yourself. Don't disturb the session, guys. If you're not willing, just leave the जी session सर. and move on. Hello. Hello. Kindly mute the session. No, if you people are not willing to attend, just mute yourself. Don't disturb others in the session. Let it run smoothly. Okay. After the immunity test, we are going to take the readings within 48 hours and 21 days. The first 48 hours, that is the early reaction period, and in the 21 days, it is late reaction period. Okay. The first early reaction is known as the Fernandez reaction, and the late reaction is the Mistua reaction. In the first early reaction, we are going to see the diameter of red area. Is it more than 10 mm or less than 10 mm at the end of 48 hours? If it is more than 10 mm, then we consider it a positive. And positive Fernandez reaction is suggested as an indication of prior exposure or the infection present in the patient. And the late reaction, if there is a nodule more than 5 mm in diameter at the site of inoculation, the reaction is said to be positive. And the positive reaction, the person is resistant to leprosy, which is a good sign. The uses of leprosy test is the for evaluation of the CMI status of the patient, to confirm the classification of leprosy, and to estimate the prognosis of the cases. These are the main uses of the leprosy test, lepromin test. In this way, we are going to perform the lepromin test. And this is the early reaction, that is the Fernandez reaction. And this is the late reaction, that is the Nisdua reaction. Then how we are going to diagnose the leprosy? We are going to diagnose the leprosy based on two parameters, that is the clinical features and the demonstration of acid-fast bacilli in the slit skin smear. The first clinical features, as we already seen, that is the first is the definitive loss of sensation, that is hypoanesthetic sensation in the affected patch, in a pale or reddish skin patch, then thickened or enlarged peripheral nerve with the loss of sensation and or weakness of the muscle supplied by that nerve. Then third, microscopic detection of bacilli in a slit skin smear, that is the acid-fast bacilli stain. And based on the above, the cases are classified into two main types for the treatment purpose, that is paucibacillary cases and multibacillary cases. This is the sensory testing. This is the pricking sensation, and the image showing the slit skin smear, which showing the presence of fast bacilli in the smears. Then major common sites for the slits taken the smears, that are earlobes most commonly, then forehead, then chin, then elbows, exterior surface of external surface of the elbows and external surface of the knees. And why these sites are chosen? Because they have the high bacterial load, and because of the high bacterial load, these sites often give the concentration of bacteria present in the body. In this way, yes, yes, any problem? Yes, Mr. Kumar, do you have any queries? Hello?
Okay. Ma'am, you can continue. So in this way, we are going to take the smears, sample for the smears from the pinna. In this way, these are the sides of taking the smears. Now, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया? हेलो हेलो, is it not understandable? हेलो यस सर, क्या नहीं समझ में आया प्लीज? हेलो Ma'am, you just continue. I will remove this kind of people from the session only. That will Okay. be fine. At least other people will not have issues with this thing. Okay. Okay. Now we are going to see the WHO classification of the leprosy. As we saw, for the treatment purpose, there are the two major types of classification, that is paucibacillary and multibacillary leprosy. In the paucibacillary leprosy, skin lesions are 1 to 5 skin lesions, and in the multibacillary leprosy, there are the more than 6 skin lesions. In the paucibacillary leprosy, nerve involvement, there is maybe nerve involvement or 1 to 2 nerve involvement, but in the multibacillary leprosy, there are the more than 2 nerves involvements are there. In the paucibacillary leprosy, slit smear may be negative, and in multibacillary leprosy, there is a positive slit leprosy, positive smear is there. And most commonly nerve involvement is the ulnar nerve involvement. The which classification system is used to categorize leprosy based on the bacterial load? The WHO classification. That is paucibacillary and the multibacillary. The treatment protocol for the leprosy. There are the two types of treatment for the 6 month for paucibacillary and the 12-month treatment for the multibacillary. In this way, the treatment regime given by the WHO for the adult children and children for age 10 to 14 years and children more than 10 years or more than less than 40 kg, less than 10 years and less than 40 kg. That are drug of choice are the rifampicin, clonazepam and dapsone. It's given 600 mg once a month, rifampicin, clonazepam 300 mg once a month, and then 50 mg daily. Dapsone 100 mg daily for the 12 months for multibacillary and 6 months for the paucibacillary. For the children, rifampicin given. साउंड आना बंद कर लीजिए. क्या हुआ? हेलो मैम क्लियर नहीं दिख रहा है. ओके, ये क्लियर है? नहीं. ओके, मैं इसका आपको बाद में पीडीएफ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि इसका इमेज मैंने वो WHO की साइट से लिया ना, उसका एज इट इज आ रहा है, मैं इसका आपको शेयर कर दूंगी. ओके मैम. ओके, तो जिस इसमें याद रखना है कि इसमें 3 ड्रग्स ऑफ चॉइस है, रिफाम्पिसिन, क्लोनज़ेपिन एंड डैप्सोन. रिफाम्पिसिन मंथ में एक ही बार दिया जाता है. क्लोनज़ेपिन जो है एक बार दिया जाता है 300 mg का डोज, और उसको फिर डेली बेसिस पे भी उसका डोज दिया जाता है. ठीक है, तो हम इसको लेप्रेसी को ये ड्रग्स के थ्रू तो ट्रीट करेंगे, बट हाउ वी आर गोइंग टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल द लेप्रेसी. तो हमारे एज वी नो देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, द टर्शियरी प्रिवेंशन. तो हमारे प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या क्या आएगा? हेल्थ एजुकेशन, लिविंग कंडीशन इंप्रूव करेंगे हम पेशेंट की, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन लाइक रिफाम्पिसिन जो है हमारे जो मल्टी ड्रग थेरेपी है हम वो देंगे, और बीसीजी वैक्सीनेशन के लिए लोगों को प्रमोट करेंगे. तो दीज आर द मेन 4 पैरामीटर्स अंडर द प्राइमरी प्रिवेंशन, दैट इज हेल्थ एजुकेशन. हेल्थ एजुकेशन से हम क्या करेंगे? पेशेंट लोगों को अवेयर करेंगे कि जिसके वजह से पेशेंट के सिम्टम्स वगैरह जो है वो जल्दी आइडेंटिफाई करेंगे और रिपोर्टिंग जल्दी करेंगे. उसके वजह से क्या होगा? मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लेप्रेसी जो हम कम कर सकेंगे. इफ ऑल द पेशेंट्स आर अंडर ट्रीटमेंट,
अगर सब पेशेंट अंडर ट्रीटमेंट लेते हैं तो वो कैरियर नहीं रहते हैं, जो अनट्रीटेड रहते हैं वो ही हमारे कैरियर रहते हैं। तो इसलिए हमको मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है हमको कम करना है। देन वी हैव टू रिमूव द स्टिग्मा फ्रॉम द ऑफ द कम्युनिटी। तो हम हेल्थ एजुकेशन के थ्रू क्या करेंगे, स्टिग्मा रिड्यूस करेंगे, लोगों को एनकरेज कर लेंगे कि अर्ली रिपोर्टिंग करें। ठीक है, उसके बाद पेशेंट की जो कंडीशंस है, मेजर क्या होता है, दिस इज द क्राउडेड प्लेस में ज्यादा होता है, ओवर क्राउडिंग की वजह से होता है, और हमने सैनिटेशन प्रॉपर नहीं रखा तो होता है। तो इसलिए हम पेशेंट को क्या बोलेंगे कि लिविंग कंडीशन जो है उनकी वो इम्प्रूव करे, ओवर क्राउडिंग रिड्यूस करना है, और सारा जो हमारा एनवायरमेंट है उसको क्लीनली मेंटेन करके रखना है, और स्ट्रिक्टली हमारे मल्टी ड्रग रेजिम जो है उसको अडेयर करके रखना है। उनको जो ट्रीटमेंट है वो कंटिन्यूअसली फॉलो करना है, बीच में ही छोड़ना नहीं है। ठीक है, और बीसीजी वैक्सीनेशन के लिए उनको हमको ये करना है कि कंपल्सरी इम्यूनाइज करना ही करना है। देन मूविंग बैक मैम, टू, हेलो यस मैम, ड्रग बोलिए। वाला पेज थोड़ा बैक कीजिए ना, स्क्रीनशॉट लेना है। मैं उसका आपको पीपीटी शेयर दे देती हूँ, पीपीटी नहीं, उसका पीडीएफ शेयर कर देती हूँ। ओके मैम। ठीक है, उसका आपका नहीं आएगा ठीक से। ओके ओके मैम। ओके, ठीक है ना। सेकेंडरी जो है, सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या आएगा, इसमें अर्ली डिटेक्शन आता है और ट्रीटमेंट आता है। तो इसमें हम क्या कर लेंगे, अर्ली केस डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट करेंगे। तो हम जो भी एक्टिव केसेस है उनको हम आइडेंटिफाई करके उनका तब के तब उनका हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि उनका जो कॉम्प्लिकेशंस है वो नहीं होंगे। उसके बाद मल्टी ड्रग थेरेपी हम चालू कर देंगे, लाइक डेप्सोन, रिफाम्पिसिन एंड क्लोनजापिम, टू कंट्रोल द further growth of Mycobacterium leprae and prevent the transmission. उसके बाद ड्रग रिलेटेड रिएक्शंस भी होते हैं और नर्व डैमेज भी होते हैं, हमको थ्रू द यूज ऑफ कार्टिकोस्टेरॉइड्स एंड स्टेरॉइड्स के थ्रू हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सब आता है हमारे सेकेंडरी प्रिवेंशन में। सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या क्या आ रहा है, हमारा अर्ली केस डिटेक्शन आ रहा है और ट्रीटमेंट आ रहा है, मल्टी ड्रग थेरेपी प्रोविजन आ रहा है, और अर्ली ट्रीटमेंट टू द जो भी साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं या जो भी डैमेज हो रहा है उसका हम प्रिवेंशन कर रहे हैं। टर्चरी प्रिवेंशन में आएगा हमारा पूरा डिसेबिलिटी प्रिवेंशन आएगा और रिहेबिलिटेशन आएगा। तो हम इसको कैसे करेंगे, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी और फिजियोथेरेपी देके, जिसकी वजह से क्या होगा, वी हेल्प द पेशेंट टू रिस्टोर द देयर फंक्शंस एंड मिनिमाइज द डिफॉर्मिटी। उसको फिर हम क्या करेंगे, सेकेंड डिवाइसेस, असिस्टिव डिवाइसेस, देयर आर द नंबर ऑफ असिस्टिव डिवाइसेस अवेलेबल इन द मार्केट, हम उसका यूज करने को बोलेंगे, जिस वजह से उनका क्या होगा, डेली लिविंग एक्टिविटीज में उनका सपोर्ट होगा, लाइक फुट वियर्स, प्लेन्स, प्रोस्थेटिक डिवाइसेस, ये जो है वो उनको हम प्रोवाइड कर सकते हैं। देन द सोशल एंड इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन, अगर पेशेंट को जरूरत है तो हम फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए उनको थ्रू द एनजीओ के वगैरह थ्रू हम उनको हेल्प कर सकते हैं, और सम काइंड ऑफ स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग हम उनको दे सकते हैं ताकि वो सेल्फ एम्पावरमेंट बन सकते हैं। देन एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ और एडवोकेसी, हम उनको लीगल जो है हमारे राइट्स जो है, राइट्स के थ्रू हम अवेयर कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनका डिस्क्रिमिनेशन कम होगा और वो सोशली एक्सेप्टेबल हो सकते हैं। तो दीज ऑल द components comes under the tertiary prevention, like reconstructive surgery and physiotherapy, assistive devices, social and economic rehabilitation, and anti-discrimination law and advocacy to the community. So these are all the three prevention. ये clear हो गए हैं सबके? Primary prevention में हमने हेल्थ एजुकेशन देखा, इम्प्रूव लिविंग कंडीशन देखा, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन देखा और बीसीजी वैक्सीनेशन देखा। सेकेंडरी प्रिवेंशन में हमने देखा अर्ली केस डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट, मल्टी ड्रग थेरेपी एंड ट्रीटमेंट फॉर द रिएक्शन एंड नर्व डैमेज प्रिवेंशन। एंड टर्शियरी प्रिवेंशन हमने देखा रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, असिस्टिव डिवाइसेस, सोशल एंड इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन एंड एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज एंड एडवोकेसी। तो दीज आर ऑल द प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजीज। तो हमने अभी इसमें देखा कि एक ड्रग की वजह से रिएक्शन भी आती है जो सेकेंडरी प्रिवेंशन में हमको कंट्रोल करना है, तो व्हाट इज कॉल्ड एज दैट इज अ लेप्रा रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, सारे पेशेंट को नहीं आते हैं, बट सम पेशेंट में डेवलप द कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू ड्रग्स, तो उसमें उसको बोला जाता है लेप्रा रिएक्शन, दैट इज अ लेप्रेसी रिएक्शन बिकॉज ऑफ सम साइड इफेक्ट्स, और उसकी वजह से सम डिसेबिलिटीज भी कभी कभी हो सकती है। तो हमको ये लेप्रा रिएक्शन पहले आइडेंटिफाई करके उसको ट्रीट करना है। तो व्हाट इज लेप्रा रिएक्शन, इट इज अ सडन इंक्रीज इन द इन्फ्लेमेशन इन द लेप्रेसी पेशेंट ड्यू टू द इम्यून सिस्टम, जिसका इम्यून सिस्टम जिस तरह से वो उस हिसाब से माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे को क्या करता है, रिएक्ट करता है। तो ये जो लेप्रा रिएक्शन है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, देयर आर द रेडनेस,
swelling and pain in the skin and the nerves. इसमें fever मिलेगा, joint pain and redness of the eye and formation of subcutaneous nodule. So these are the characteristics of the lepra reactions. तो ये दो प्रकार की होती है लेप्रा रिएक्शन, दैट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, दैट इज टाइप 1, एंड एरिथेमा जिसमें नोडल्स फॉर्म हो जाते हैं, दैट इज अ टाइप 2 ऑफ रिएक्शंस. So these is the classification of two यानी क्या बोलता है इसको, distinguished features of the lepra reaction, that is type 1 and टाइप 2. तो टाइप 1 जो है ये डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी इसमें होता है, और इसमें बोथ पॉसिबैसिलरी एंड मल्टीपॉसिलरी लेप्रेसी में हमको दिखता है. और इसके क्लिनिकल फीचर्स होते हैं स्किन लेजन्स, रेडिश, सोलन, वार्म, पेनफुल और टेंडर हो जाते हैं. और इसमें ड्रग ऑफ चॉइस होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, और इसमें हम पैरासिटामोल भी प्रीफर करते हैं देना. देन टाइप 2 जो होता है वो बिकॉज ऑफ द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से होता है, और इसमें मल्टीबैसिलरी लेप्रेसी में ही ये दिखेगा. इसमें क्लिनिकल फीचर्स आएंगे रेड, पेनफुल, टेंडर एंड सबक्यूटेनियस नोडुल्स हमको इसमें दिखेंगे. और इसमें इवन फीवर, जॉइंट पेन और रेड आइज और रेड वाटरिंग आइज ये भी हमको दिखेंगे. इसमें ड्रग ऑफ चॉइस, इसमें भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आता है, और इसमें भी हम पैरासिटामोल प्रीफर करते हैं. So this type of the reaction we are going to see in the lepra reaction. So how we are going to manage this reaction? The first most important is the early diagnosis and proper treatment for the reactions. तो हम क्या करेंगे, एवरी पेशेंट को हम इन्फॉर्म करेंगे कि इस तरह की रिएक्शंस हो सकती है, so they can become aware and they report immediately and inform they to go as soon as possible to the health centers. और उनको हमको क्या करना है, रीएश्योरेंस देना है कि रिएक्शंस जो भी है वो ट्रीटेड है, ट्रीटेबल है, उसका दे आर नॉट बिकॉज ऑफ द साइड इफेक्ट्स नहीं है, वो बिकॉज ऑफ द उनका इम्यूनिटी रिएक्शन, जो इम्यूनिटी का है उनका रिएक्शन लोड उसकी वजह से होता है. एंड इट डज नॉट मीन कि हमारा जो मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट है वो वर्क नहीं कर रहा है. तो हमको ये 3 एस्पेक्ट्स के लिए पेशेंट को रीएश्योर करना है. देन इसके लिए रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो हमको उनको क्या करना है कि जहां भी वो है वहां से उन्होंने रेस्ट लेना है. मेडिकल रेस्ट एडवाइस किया जाता है कुछ दिनों के लिए. एंड फॉर द कंट्रोल ऑफ पेन एंड फीवर के लिए हम एस्पिरिन और पैरासिटामोल देते हैं, और जो हमारा मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट है वो रेगुलरली उनको चालू रखने को बोलते हैं. देन रिएक्शन विच नॉट इन्वॉल्व द स्किन, जिसमें जो रिएक्शन में स्किन इन्वॉल्व नहीं होती है, सिर्फ पेन और फीवर रहता है, तो हम उनको रेस्ट एडवाइस करते हैं, और पेन किलर्स इतना सफिशिएंट है. देन रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स द नर्व्स, जिसमें नर्व्स इन्वॉल्व हो जाती है, तो उसमें हम क्या करेंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है हम एज सुन एज स्टार्ट करते हैं, और जो भी साइन एंड सिम्टम्स है उसकी अकॉर्डिंगली हम साइन एंड सिम्टम कंट्रोल करने के हिसाब से उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं. तो दीज आर द मेजर साइड इफेक्ट्स भी कभी कभी होते हैं. तो उसमें रिफाम्पिसिन की वजह से क्या होता है, रेड कलर यूरिन हो जाती है, तो हमको पेशेंट को रिएश्योर करना है दैट इज बिकॉज ऑफ द ड्रग. इसका कोई ये नहीं है, क्या बोलते हैं, साइड इफेक्ट्स नहीं है, जस्ट दिस इज बिकॉज ऑफ द ड्रग है, तो घबराने की कोई बात नहीं, हमको ये रिएश्योर करना है पेशेंट को. देन डार्कनिंग ऑफ द स्किन, स्किन का कलर भी डार्क होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द क्लोपेरिजिन. तो इसमें भी हमको पेशेंट को क्या करना है कि ये ट्रीटमेंट के बाद ये ऑटोमेटिकली चले जाएगा, ये हमको रिएश्योर करना है. देन समटाइम्स ईचिंग, सीवियर ईचिंग भी हो सकता है पेशेंट को, तो बिकॉज ऑफ द डेप्सॉन की वजह से होता है. तो ये जैसे ही ड्रग खत्म हो जाएगा ये आपका ईचिंग भी कम हो जाएगा, ये हमको पेशेंट को बताना है. और अगर नहीं होता है तो हम पेशेंट को हॉस्पिटल में रेफर करते हैं. देन ट्रीटमेंट फॉर द डिसेबिलिटीज, डिसेबिलिटी होती क्यों है, तो पहले तो हम क्या करते हैं, लेट ट्रीटमेंट चालू करते हैं, लेट डायग्नोज होता है उसके वजह से होता है. तो हमको क्या करना है, तो हमको एज अर्ली एज पॉसिबल हमको मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट चालू करना है. बाद में एडवांस डिसीज के वजह से होता है, जैसे मल्टीबैसिलरी लेप्रेसी में हमको ये दिखेगा. लेप्रेसी रिएक्शन जिसमें नर्व इन्वॉल्वमेंट हो जाता है उसमें डिसेबिलिटी हो जाता है, और बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन कि हमको पेशेंट को इन्फॉर्म नहीं प्रॉपरली होता है, पेशेंट को अवेयर प्रॉपरली नहीं होता है कि हाउ टू प्रोटेक्ट, बिकॉज द पेशेंट कहाँ गए? लॉस ऑफ सेंसेशन. क्या हो गया, दिख नहीं रहा? हेलो, नहीं दिख रहा है मैम, दिख रहा है. हाँ
तो इसमें क्या होता है, पेशेंट को एज पहले ही हमारा सबसे पहला सिम्टम होता है कि लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाता है। तो लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाने की वजह से क्या होता है, पेशेंट वो पार्ट की प्रॉपरली केयर नहीं करता है, तो उसके वजह से वहाँ का जो स्किन होता है, वहाँ का जो एरिया होता है वो डैमेज होते जाता है। और वो डैमेज की वजह से अगर वो प्रॉपरली केयर नहीं करते हैं तो उसकी वजह से वहाँ का सेंसेशन लॉस होके वो पार्ट जो है पूरा नेक्रोटाइज हो जाता है, और उसकी वजह से फिर वहाँ पे डिसेबिलिटी चालू हो जाती है। तो हमको पेशेंट को क्या करना है कि हाउ टू टेक केयर ऑफ दैट पार्ट, हमको ये पेशेंट को एजुकेट करना है। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट डिसेबिलिटी इज द फॉर्म डायग्नोसिस, अर्ली डायग्नोसिस एंड द ट्रीटमेंट विथ मल्टी ड्रग थेरेपी। हमको पेशेंट को इन्फॉर्म करना है कि उनके कॉमन साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होता है, एंड आज द पेशेंट टू कम टू द सेंटर, हॉस्पिटल जाके उनको वहां पे रजिस्टर करना है, और वहां पे जो भी बताते हैं वो फॉलो करने के लिए उनको हमको अवेयर करना है। देन स्टार्ट ट्रीटमेंट फॉर द रिएक्शन, जो जैसे भी हैंड्स फीट आईज के हमको जो भी हमको अर्ली साइंस दिखते हैं उसके लिए जल्दी से जल्दी हमको ट्रीटमेंट चालू करना है। एंड इन्वॉल्व द फैमिली मेंबर्स, हमको क्या करना है, फैमिली सेंटर्ड केयर अप्रोच यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, जिसके वजह से क्या है, हम पेशेंट जो है वो स्टिक अप रहता है अपने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से, और हमारे फैमिली मेंबर्स जो है वो इन द अब्सेंस ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स दे आर टेकिंग केयर ऑफ द पेशेंट। तो हमको फैमिली सेंटर्ड केयर इसलिए अप्रोच यहाँ पे फॉलो करना है। देन हाउ टू टेक केयर ऑफ द फीट, हमने देखा है कि यहाँ पे फीट हमारे एक्सट्रीमिटीज जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, तो हमको फीट की केयर कैसे करना है, अगर क्रैक्स है और फिशर्स है तो हमको क्या, हम उसको क्या करेंगे, वाटर में सोक करके रखेंगे। द सिंपल वे, अप्लाई द ऑयल और वैसलीन एंड यूज ऑफ द फीट वेयर। देन फॉर द ब्लिस्टर्स, हमको ब्लिस्टर्स को ओपन नहीं करना है और वहां पे बैंडेज अप्लाई करके रखना है। इफ द सिंपल अल्सर्स आर देयर, सिंपल सोप एंड वाटर से उसको एंड रेस्ट एंड पेशेंट को रेस्ट एडवाइस करना है और बैंडेजिंग करना है। देन अगर अल्सर जो है वो इन्फेक्टेड है तो हमको उसको प्रॉपरली क्लीन करके उसको एंटीसेप्टिक का हमको ड्रेसिंग अप्लाई करना है। देन इफ द वुंड्स एंड अगर वुंड्स और इंजुरी हो गया है तो हम क्या करेंगे, सेम उसको क्लीनिंग करेंगे, ऑयल से ऑयल अप्लाई करेंगे जिसकी वजह से वहां पे स्मूथनिंग रहेगा, और क्लीन बैंडेज अप्लाई करेंगे। और जब भी काम करते हैं यानी जब भी कुछ भी करते हैं तो वहां पे वो पोर्शन को कुछ भी अफेक्ट नहीं होगा, उसके लिए हम उनको प्रोटेक्शन यूज करने के लिए बोलेंगे। देन वीकनेस और पैरालिसिस है तो हम क्या करेंगे, वहां पे पेशेंट को ऑयल मसाज से थ्रू वहां का मसाजिंग करने को बोलेंगे, पेशेंट को एक्सरसाइजेस के लिए प्रमोट करेंगे और हेल्थ सेंटर में रेफर करेंगे। इफ द आई इन्वॉल्वमेंट इज देयर तो रेडनेस एंड पेन के लिए हम एस्पिरिन और पैरासीटामोल के आई ड्रॉप्स होते हैं वो एडवाइस करेंगे। एट्रोपिन और स्टेरॉइड ऑइंटमेंट रहते हैं वो अब क्या करेंगे, एडवाइस करेंगे। कॉर्निया को इंजुरी अगर होती है तो आईपैड हम कवर करने को बोलते हैं, एंटीबायोटिक का अप्लाई करने को बोलते हैं और रेफर करते हैं ऑप्थेल्मिकोलॉजिस्ट को। इफ कभी कभी नर्व इन्वॉल्वमेंट की वजह से आई ओपनिंग के लिए प्रॉब्लम हो जाता है तो इसलिए हम क्या करते हैं, टीयर सब्स्टिट्यूट आई ड्रॉप्स जो होते हैं वो देते हैं, पेशेंट को आई की एक्सरसाइजेस एडवाइस करते हैं और डार्क ग्लासेस एडवाइस करते हैं फॉर टू प्रोटेक्ट द आई, और इनको भी हम रेफर करते हैं। तो दीज आर ऑल द केयर ऑफ स्पेसिफिक पार्ट्स। ओवरऑल जो है पोस्ट कॉम्प्लिकेशंस के ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, पेशेंट ने प्रॉपरली सारी ट्रीटमेंट ले लिया है तो अब पेशेंट जो है अपने पास आया फॉलोअप के लिए, तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे कि उसने बहुत अच्छी पूरी ट्रीटमेंट प्लान किया है। देन फैमिली और फ्रेंड्स को थैंक्स कहेंगे कि उन्होंने पेशेंट को सपोर्ट किया था। पेशेंट को हम रीएश्योर करेंगे कि एमडीटी की वजह से कंप्लीटली ये जो है लेप्रेसी क्योर होती है। अगर कोई लेजन्स रह गए हैं आफ्टर ट्रीटमेंट ऑल्सो तो हम पेशेंट को बताते हैं कि वो भी धीरे धीरे करके फेड ऑफ हो जाएंगे स्लोली। देन उनको हम क्या करेंगे, एक दिखाएंगे कि हाउ द एनेस्थेटिक एरिया को है और डिसेबिलिटीज जो है उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ प्रोस्थेटिक डिवाइसेस, वो किस तरह से नॉर्मल फंक्शनिंग कर सकते हैं। देन उनको
जो भी उनका प्रॉब्लम्स है उसको लेके हमारे पास फिर से फॉलोअप के लिए आइए, हम बता सकते हैं और उनको हमेशा वेलकम करेंगे कि जो भी उन्होंने प्रॉपरली कंसल्टेशन किया है, प्रॉपरली ट्रीटमेंट किया है इसके लिए। तो जब भी पेशेंट हमारे पास फॉलोअप के लिए आता है, हमको ये सारे पेशेंट के साथ डिस्कस करना है। तो इन दिस वे पहले हमारे पास जब पेशेंट आता है लेप्रोसी का, वो इस तरह से दिखता है और आफ्टर ट्रीटमेंट पेशेंट इस तरह से दिखता है। तो इसलिए हमको क्या करना है, पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट टाइम टू टाइम देते रहना है। तो ये हो गया ओवरऑल। तो एज अ ये हेल्थ सेक्टर है, तो हमारा मेन अथॉरिटी होता है WHO। तो WHO ने इसके लिए कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड की है फॉर द हेल्थ केयर वर्कर्स। तो इसमें एक 2018 का गाइडलाइन है जिसमें वो ट्रीटमेंट कैसे डायग्नोस करना है, प्रिवेंशन कैसे करना है, इसके रेजिम्स पूरे बताते हैं। और इन 2021 उन्होंने फिर से एक रिवाइज दिया है कि जिसमें जीरो लेप्रेसी जो हमारा गोल है वो कैसे अचीव करना है बाय 2030 तक। तो इसका उन्होंने हमको एक आउटलाइन दिया है कि हम किस तरह से वो गोल हमारा अचीव कर सकते हैं। तो दीज आर द 2 गाइडलाइंस अवेलेबल ऑन द WHO प्लेटफॉर्म। देन उन्होंने स्ट्रेटेजी पिलर्स बताया है कि जो भी एंडेमिक हमारे जो हमने अभी देखी स्टार्टिंग में, वो जो एरियाज है वहां पे हम जीरो लेप्रेसी रोड मैप्स कैसे बना सकते हैं और जो भी हमारा लेप्रेसी प्रिवेंशन का माइलस्टोन है वो किस तरह से अचीव कर सकते हैं, इसके लिए उन्होंने स्ट्रेटेजीज भी उसमें बताई है। तो उसमें सबसे पहले मैनेज लेप्रेसी आता है, उसका कॉम्प्लिकेशन आता है। बाद में जो भी स्टिग्मा है वो डिफीट करना है, कैसे डिफीट करना है और ह्यूमन राइट्स कैसे अपहोल्ड करके रखना है वो बताते हैं। और उसमें डिपेंड्स ऑन द उसका स्टेजिंग है, उसके हिसाब से हम किस तरह से स्ट्रेटेजिक फेजेस हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो उसमें बताया गया है। तो वो जो गाइडलाइन है, गाइडलाइन इज अवेलेबल ऑन द WHO प्लेटफॉर्म, उसमें सारा ये दिया गया है। तो हाउ वी आर गोइंग टू कंट्रोल द पेशेंट कॉन्टैक्ट्स एंड द इमीडिएट एनफोर्समेंट। तो सबसे पहले पेशेंट को जब भी कुछ होता है तो पेशेंट ने क्या करना है, रिपोर्ट करना है हमारी लोकल हेल्थ अथॉरिटी जो भी है उनको। आइसोलेशन क्वेश्चनेबल है कि अगर वो स्टिग्मेटाइज है तो उसका स्टिग्मा कम करने के लिए हमको क्या करना है, उसको आइसोलेशन अवॉइड करने के लिए बोलना है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर द एम्प्लॉयमेंट और अटेंडेंस की, उन्होंने जाके जॉब नहीं करना है, स्कूल में नहीं जाना है, ऐसा कुछ नहीं है, उसको आइसोलेशन नहीं करना है। क्वारंटाइन नॉट अप्लीकेबल है, एट ऑल नॉट अप्लीकेबल है। इम्यूनाइजेशन ऑफ द कॉन्टैक्ट्स ऐसा कुछ रिकमेंडेड नहीं है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ द कॉन्टैक्ट, हेलो बोलिए। इन्वेस्टिगेशन ऑफ जो भी कॉन्टेक्ट्स में आए हैं उनका भी एक हम क्या कर लेते हैं, इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं कि उनको कुछ इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है। और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जो है मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट जो है वो हम उसको ये करते हैं। किसी भी तरह से बीच में ट्रीटमेंट को इंटरप्ट नहीं करना है। प्रॉपर ट्रीटमेंट को जो भी हमारा मल्टी ड्रग थेरेपी है उसको अधेर करके रखना है, ये हमको वहां पे पेशेंट को बता के रखना। तो एलिमिनेशन एज हमको 2030 तक पूरा लेप्रोसी को एलिमिनेट करना है। तो देयर आर सम क्राइटेरियाज है कि हम किस तरह से उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रैक्टिकल और सिंपल डायग्नोस्टिक टूल जो है हमको यूज करना है कि जो भी साइन एंड सिम्टम्स दिखते हैं पेशेंट को तो वो हमको पहले उन्होंने रिपोर्ट करना है। अवेलेबिलिटी ऑफ एन इफेक्टिव इंटरवेंशन, हमारा मल्टी ड्रग थेरेपी का जो WHO ने दिया है उसको इंटरप्ट नहीं करना है। पूरा ड्रग थेरेपी जो है प्रॉपर 12 मंथ, अगर पॉजिटिव बैसिलरी है तो 6 मंथ के लिए लेना है, मल्टी बैसिलरी है तो 12 मंथ के लिए लेना है। उसके बाद दीज आर ऑल द फंडिंग एजेंसीज और ग्लोबल पार्टनर्स फॉर द इरेडिकेशन ऑफ लेप्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो दीज आर द एलिमिनेशन स्ट्रेटेजीज। मल्टी ड्रग थेरेपी प्रोवाइड करना है ऑल कम्युनिटी को। चेन जो है वो ब्रेक करने की हमको थ्रू द इंटेंसिव केस डिटेक्शन एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, improving the quality of patient care, including disability prevention and management, ensuring regularity and completion of the treatment, encouraging and ensuring community participation, providing the rehabilitation
जो भी पेशेंट हमारा डिफॉर्मिटीज से वगैरह है तो हमको उनको रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करना है, एंड ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ एजुकेशन टू द पेशेंट एंड देयर फैमिलीज एंड द communities. So there are some common myths and misconceptions regarding the disease. क्या है myths? Hansen disease is very contagious. तो fact क्या है? Hansen disease does not spread easily from person to person. You cannot get it through the casual contact, and just like a shaking hands, sitting next to the patient, talking to someone. It's not like that. Then myth, second myth क्या है? There is no cure for Hansen disease. Fact क्या है? Hansen disease is a curable. People being treated for Hansen disease can live a normal life as a normal person with their family and friends also, and they can attend their work or school regularly. Then दूसरा myth क्या है? Hansen disease makes your fingers and toes fall off. और fact क्या है? Finger and does not fall off because of the disease. It's because of the bacteria that causes the disease attack to the nerve. जब भी नर्व इन्वॉल्वमेंट हो जाती है उसके वजह से ये फॉलो ऑफ होते हैं. इफ अगर हमने अर्ली डायग्नोस और ट्रीटमेंट चालू कर दिया तो दिस टाइप ऑफ साइन एंड सिम्टम्स नॉट गोइंग टू अपीयर. तो द मेजर ऑब्स्टेकल फॉर एलिमिनेटिंग लेप्रेसी इज all in the endemic countries are the main is the stigma related to leprosy. So how we are going to remove this stigma? Through the mass media, through the integrated primary health services, and through the proper education and training. So these are the three main strategies to overcome the stigma. So thank you for your patience listening. The overall World Leprosy Day is celebrated on the last Sunday of the every month of first month of January internationally. And the closing thought for today's session is, as a nurse, we must strengthen our clinical skill, promote early detection, prevent disability, lead anti-stigma initiatives, and advocate for patient dignity. So let's remember, the greatest therapy for any disease is compassionate care only. Through the knowledge, awareness, and empathy, we can transfer leprosy care from mere treatment to true healing. Thank you very much. Thank you, Meena ma'am, for this lovely presentation and making understand each and everything very clearly to all of them. So if anyone is having any questions, they can ask ma'am. Ma'am is there to help you. Does anyone Yeah, good morning, ma'am. I'm Prem Prakash, a PhD scholar in MM Mulana, and thank you so much for ma'am for the wonderful session. We all doubts is clear regarding the in short presentation, ma'am. Thank you so much. Thank you, sir. Does anyone else? I think no one is having any questions. All the doubts are clear of the students, and like some of the faculties are also I'm able to see over there. Ma'am, that drug regime, I will share the PDF of that WHO regime. I will share to you. You can share to all. Yeah, definitely, ma'am. I will do it for sure. So, is any doubt? I think anyone is having any doubt? Or any suggestion also? Suggestions also welcome. मैम आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. हेलो. थैंक यू सर. हेलो. हाँ सर बोलिए. मैम ड्रग ऑफ चॉइस कैसे मिलेगा? हाँ मैं वो मैम के साथ शेयर कर रही हूँ. मैम आपको शेयर कर देंगे. ओके मैम. पीपीटी भी मिलेगा भाई. हाँ मैं पीपीटी भी शेयर कर देते हैं. Anything else?
Amita ma'am is also there from Graphic Era University, Uttarakhand. So ma'am, I would like to, you also to say something. Meena ma'am also ma'am. मुजफ्फर कहाँ गया? It was a nice session, and Madam just explained everything in details. So it was very good. मुजफ्फर को खोजो Thank कहाँ you है? so much, ma'am. Thank you. कौन का डिप दे? खोजो डिप दे. We'll do one thing now. We will wind up the sessions. I think no one is having any questions and all. So I would like to ask Suman Khatkar ma'am, the associate professor in Markandeya University. Ma'am, I want to ask you to just give a vote of thanks to ma'am. Thank you, ma'am. I'm audible to all. Good afternoon, everyone. Firstly, I would like to extend my heartfelt gratitude to our expert speaker, Dr. Meena R. Pagarwal, for enlightening us with their profound knowledge on बंधन leprosy. नोट्स दो तो Very अपना. wonderful session. Enjoyed our authentic voice, and you are very articulate and compelling बंधन speaker. Your words अपना नोट्स दो ना. really Your words really resonated with us, ma'am. You radiated warmth and connected deeply with the audience. I thanks to memorable presentation and hope you will visit us again and join us. You provided valuable insight and engagingly thanks for sharing your expertise. I would like to thanks to Collaboration Foundation, which is GI Academic Foundations, organizing this meet. Special thanks makes more coordination to Miss Manisha Agrari ma'am for their contribution support and collaboration. I must thanks to organizing committee member Dr. Uma Zibamani Gadia, MMM Dean to University Mulana. Finally, thanks to all participants for our actively engagement and making this session wonderful and success. Thank you. Thank you so much, ma'am, for giving me the opportunity as an expert to talk on this topic. Thank you so much. Thank you. So we will wind up for the day. And Meena ma'am, thanks for your precious time to us. Thank you, Suman ma'am, for trusting us that we can make this session live for like most of the students, like those who are not able to clear that what exactly is leprosy after studying all the sessions. Thank you so much, ma'am. Yeah, most welcome, ma'am. And really, there are lots of nuisance during the. I don't know why people they are not able to like mute themselves. So I'm not able to understand why these kind of people they used to attend the class, this kinds of webinar and all, because these are the live webinars. We used to conduct these webinars for understanding the things to the people. And such kind of people, seriously, if they will create this kind of nuisance, ma'am, we can't conduct these kinds of webinar live. So finally, we will wind up the session for the day. Thank you, Meena ma'am, for your precious time. Thank you, and all the best to all of you. Enjoy your day. Thank you, ma'am. Happy Holi in Thank you so advance, much. everyone. Yeah, wishing you the same. Thank you. Okay. Okay, good day, everyone.